वॉरेन बफे एंड चार्ली मंजर, बर्कशायर हाथवे उनकी कंपनी है, यू नो राइट, दे कंडक्टेड देयर एनुअल समिट, ठीक है, विच दे यूज टू डू पहले भी एनुअली, बट 2 साल कोविड के चक्कर में इट वाज ऑनलाइन, तो ऑफलाइन हुआ, तो 30,000 पीपल स्टेडियम बुक किया, 30,000 पीपल केम, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एनुअल समिट एक नॉर्मल चीज है, जैसे रिलायंस भी करता है इंडिया में, ठीक है, विद ऑल देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है, सिमिलरली गूगल, फेसबुक एंड ऑल दीज फोक्स ऑल्सो डस, एप्पल एंड ऑल, ठीक है। अगर हम टेक कंपनीज की बात करें, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन की बात करें, तो वहां पर जब आप ये सुनते हैं उनके एनुअल समिट्स को, तो यू विल लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू थिंग्स विच दे आर वर्किंग ऑन। बर्कशायर की आप ये चीजें सुनते हैं, राइट, तो आप बर्कशायर की आप ये जब सुनते हैं, तो यू लर्न अबाउट द सेम ओल्ड बोरिंग स्टफ, ठीक है, लेकिन फिर से नई डिफरेंट पैकेजिंग कट करके ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग दे डज, ठीक है। टू फोक्स, लाइक आई सेड, 91-year-old, 198-year-old, Warren Buffett and Charlie Munger. They sat on the dais and they obviously talked about their company first, and they took questions, and they have a very interesting way of giving answers. तो वो उसके ऊपर कुछ 7 points I think I have written, जो मतलब आई जस्ट वांट टू शेयर, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ चीजें सिर्फ रीड करूंगा, आपको समझ आ जाएंगी, बट जो मैंने वहां से पिक किए हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ वो था कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक गैम्बलर पार्लर बन गया है, दैट्स व्हाट द वर्ड मिस्टर बफे यूज्ड, स्पेशली इन लास्ट 2 years, राइट। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, कोविड के चक्कर में, लॉकडाउन वगैरह में, यू नो हाउ मेनी accounts got opened, not just in India, across the globe, liquidity driven, so many people went to trading and everything, future options, everything, right? तो सब बहुत, और आप सब में से कुछ ना कुछ किसी ने कुछ किया होगा, ठीक है, तो वो सब बहुत हुआ, तो दैट्स व्हाई ही यूज द वर्ड गैम्बलर्स पार्लर इट बिकेम, राइट। तो Buffett said sometimes it is quite investment oriented market, and other times it is almost totally a casino, a gambling parlor, and that existed an extraordinary degree in the last couple of years, encouraged by Wall Street. So Wall Street, when he says that word Wall Street, right, so he talks about the brokers and advisors and all those folks, ठीक है, तो मतलब investment bankers, hedge funds, तो उन सबको he says Wall Street, ठीक है। तो he says Wall Street makes money one way or another, catching the crumbs that fall off the table of capitalism. They don't make money unless people do things. तो आप कुछ करोगे तो वो पैसा कमाएंगे, एंड दे गेट अ पीस ऑफ देम, तो वो तो ब्रोकर्स हैं। आप कुछ करोगे, ट्रेडिंग करोगे तो ब्रोकरेज से पैसा कमाएंगे, ठीक है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो हर चीज में एडवाइजरी से पैसा कमाएंगे, तो इस तरह से वो कमाते हैं, एंड दे मेक अ लॉट मोर मनी व्हेन पीपल आर गैम्बलिंग, राइट। तो आपको पता ही है कि व्हेन डू यू डू गैम्बलिंग और पीपल डू गैम्बलिंग, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? द पर्सन हु इज फैसिलिटेटिंग दैट, राइट। तो कसिनो मेक्स द मोस्ट ऑफ द मनी व्हेन पीपल गैम्बल, राइट। तो मंजर ऑल्सो एडेड, चार्ली मंजर ऑल्सो एडेड इन इट, ठीक है। ही सेड it was nearly a mania of speculation in the market, with algorithms trading against other algorithms, and inexperienced investors being advised by inept brokers. It is despicable. And Charlie Munger is, मतलब his use of word is very strong most of the time. He is very frank, ठीक है, तो he doesn't have a politically correct language, ठीक है, तो थोड़ा से strong words use करते हैं, ठीक है, तो that's what he said. तो मतलब in last 2 years they basically said the market is like a gambler's parlor, right? तो आप वो समझ लो कि they have seen, like both of them together has I think more than 100 years of investing experience, ठीक है, तो they are talking, so we should definitely listen to them, right? Second now point is, हाँ ये था बहुत इंटरेस्टिंग कि whenever they get good opportunities, so how they are investing, right? तो इसमें मेरे को थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि how they are thinking about investing, right? When do they invest, तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो बहुत सही है। February 26th को they wrote a letter to the shareholders this year only, and he had written that he was finding it hard to spot any good opportunity at good price at that time. So they had a very big cash, मतलब at that time their company, Berkshire Hathaway, ठीक है। बट जैसे ही ये लेटर आया उसके बाद कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कि उसके बाद बर्कशायर हाथवे स्पेंट $11.6 billion बाइंग इंश्योरेंस कॉन्ग्लोमरेट एल्गेमनी,
and they shared, I think they bought some shares of 121 million from of HP also, जिसमें 11.4% stake हो गया उनका. They got $6 billion they spent on 14.6% stake in Occidental Petroleum. तो ये इंपॉर्टेंट जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है. तो ही सेड, तो मतलब उनसे पूछा कि यार आपने 26 फरवरी को कहा था कि हमारे पास हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, एंड सडनली आप ये सब बाय कर रहे हो. तो बफे व्हाट ही सेड, राइट, ही सेड opportunities came only after he had written the annual letter. तो मतलब he is very clean, मतलब उसको he is not political guy, he said not saying कि नहीं नहीं यार ये नहीं अभी नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता. तो he said कि नहीं, after that letter I found good opportunities in the market and started investing back. ठीक है ना. So very clean and clear, transparent type of things, right? So we learned transparency from it. Third, ठीक है, the timing the market. So he talked about timing the market very well. So I'll just read it and you will understand. Buffett insisted that Berkshire has never done well with timing the markets. तो क्वेश्चन पूछा था उनसे टाइमिंग द मार्केट के ऊपर, तो दैट्स व्हाट ही रिप्लाइड. इन फैक्ट ही सेड दैट ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी इन मार्च 2020. he admitted कि मार्च 2020 में I missed the opportunity to invest. Berkshire, he said, is simply good at figuring out if a good company is at good price, at value price. ठीक है. Sometimes the team hopes the target company stays cheap. मतलब my team, Berkshire Hathaway's team, hope, right, that target company stays cheap so that they can buy more of it, he said. ठीक है ना. So thought process, right? तो timing the market with such a big experience, such a big research team, I'm sure, मतलब one of the biggest investors in the world with so much money in hand, right? He also says that he's not good at timing the market. तो आप और मैं अगर हम सोचते हैं कि वी कैन टाइम द मार्केट, तो वी आर कंप्लीटली रॉन्ग. मतलब सोचो ही मत कि आप हम टाइम कर सकते हैं मार्केट. तो ही सेड कि आई कैन, और मैंने मार्च 2020 में अपॉर्चुनिटी मिस की, तो ही इज एडमिटिंग इट, राइट. तो यू कैन इमेजिन, राइट, कि मतलब गाय हु वाज सेइंग कि भाई बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ये सब स्टोर, तो ही वाज आल्सो फियरफुल एट दैट टाइम, तो ही आल्सो कुडंट इन्वेस्ट. तो मतलब यू जस्ट लर्न, राइट, कि मतलब a person at that level and with that kind of money and everything, he is also not able to invest, right. Fourth thing was about inflation, right. So there was a lot of talk, right, in US about inflation, right. And so the question was asked to him कि भाई what do you think is the impact of inflation on everyday life, right, और आपकी markets वगैरह पे क्या impact होगा. And it was a very good answer. So he was not, so he said, Buffett said that damage from rising prices affects everybody, including equity investors, bond investors, and even those who keep their cash under mattress. ठीक है, क्योंकि money is losing the value. Buffett said that inflation also raises the amount of capital that company needs to have, right? So वो भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि inflation से, and that isn't as simple as raising prices. तो just price raise करके वो नहीं कुछ होगा उससे. To simply maintain inflation adjusted profit मेंटेन करने के लिए सिर्फ प्राइस राइज से कुछ नहीं होगा. यू नीड टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ. ठीक है. अ पर्सन अगेन सी द एक्सपीरियंस विद हियर. ही सेज नोबडी नोज हाउ मच इन्फ्लेशन विल बी नेक्स्ट 50 years or next month. I don't know how much inflation will be 50 years down the line or next month. There is a lot of curiosity around that question, and people may say they know the answer, but no one really knows. ठीक है. दैट्स व्हाट ही सेज. तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इन्फ्लेशन को. ही सेड कि ही मतलब ड्यूरिंग द व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट, तो ही आल्सो सेड कि बहुत सारा inflation is due to the lot of printing of money and there is no other major reason because so much supply of the money came in. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या डिमांड बढ़ गई, और सप्लाई कंस्ट्रेंट है ही कोविड की वजह से अक्रॉस द ग्लोब. नाउ विद यूक्रेन वॉर सप्लाई कंस्ट्रेंट अभी भी चल रहे हैं, राइट. तो सप्लाई साइड इशू भी है और डिमांड भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ मशीन. तो इन्फ्लेशन तो बढ़नी ही थी, तो एक्सपेक्टेड ही था, और इन्फ्लेशन उसकी वजह से ही बढ़ी है. तो ही एडमिटेड इट, बट ही वाज स्टिल नॉट वेरी, he didn't say कि Fed did wrong. तो he said कि Fed did the best thing they could do at that time. ठीक है. ठीक है, वो अलग डिस्कशन है. ठीक है ना. So now, so fifth point, I think, right? So now he talks about the value of cash in hand, right? So as a company, and also I think as an investor, हम एक individual investor, I always tell people to have some liquid money in hand all the time, right? एक debt allocation is very important.
ठीक है, स्पेशली मतलब एक 20-year-old को छोड़ दो तो, ठीक है। तो ही सेज वी विल ऑलवेज हैव कैश इन हैंड, एक कंपनी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इन 2008 एंड 2009 वी डिडंट ओन कमर्शियल पेपर्स, वी डिडंट हैव मनी मार्केट फंड्स, क्योंकि 2008 क्राइसिस में ये सब खत्म हो गया था, राइट, यू नो। तो वी हैड ट्रेजरी बिल्स, तो विच वाज गवर्नमेंट पेपर्स, GSECs. So we believe in having cash. If you don't have cash, you don't get to play the next day. It is like oxygen, it is there all the time, and if you don't have it for few minutes, it is all over, right? For the company, having a cash is very important. That's what he says, right? It's like oxygen, right? तो वो हमेशा चाहिए, और वो बिल्कुल सेफ रखो उसको। हमने टी बिल्स में, हम ट्रेजरी बिल्स में रखते हैं, विच इज लाइक गवर्नमेंट पेपर, GSECs है उसमें रखते हैं। हम कोई कमर्शियल पेपर्स और मनी मार्केट फंड में नहीं रखते हैं, जस्ट टू बी वेरी वेरी सेफ, ठीक है। इन 2021 बर्कशायर हाथवे जो कंपनी है हैड 144 बिलियन इन कैश एंड ट्रेजरी बिल्स, एंड अभी जो है 31 मार्च 2022 को वो कम हो गया, बिकॉज दे बॉट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, टू $103 बिलियन, राइट। तो ऑलमोस्ट दे बॉट फॉर $41 बिलियन का, तो कुछ, तो दे स्पेंट इट, ठीक है। एंड क्लियरली उन्होंने बोला है कि $30 बिलियन कैश वी विल ऑलवेज कीप इन अवर बैलेंस शीट, ऑलवेज, ठीक है। तो अभी उनके पास ऑलमोस्ट यू कैन से कि ठीक है 73 बिलियन दे स्टिल हैव, विच दे कैन स्पेंड मोर। सो अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कैश, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, कि मतलब एट दैट लेवल, right, a company which has invested in companies like Apple, right, companies, insurance companies which are so cash generating, cash rich companies he has, but still he keeps such a big amount, right? $30 बिलियन तो मिनिमम उन्होंने कमिट किया है कि हमेशा रखेंगे। अभी $104 बिलियन, $103 बिलियन he has. So the value of cash you learn from him, right? Okay, now the sixth point, right? So sixth point, many people may not like it. So Bitcoin, you know their views, I think, बहुत ही clearly, but still I'll tell them, I'll tell you कि क्या बोला उन्होंने exactly, ठीक है। बफेट सेड, तो बिटकॉइन पे क्वेश्चन पूछा उनसे, तो बफेट सेड दैट ही वुड राइट अ चेक ऑफ 1% स्टेक इन ऑल द फार्मलैंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और फॉर द सेम परसेंटेज इन ऑल द अपार्टमेंट हाउस इन द कंट्री, ठीक है। 1% स्टेक के लिए ही विल राइट अ चेक, अगर कोई देता है उसको तो। बट इंस्टेड इफ समवन ऑफर्ड हिम ऑल द बिटकॉइन इन द वर्ल्ड फॉर $25, ही वुडंट टेक इट। ही सेड कि सारे बिटकॉइन मुझे $25 में भी दोगे तो भी मैं नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। And Manjar, as I said, he is not very good at his language, matlab politically correct language. So he called Bitcoin stupid and evil, right? Stupid because he expects its value to come down to zero, and evil because it can destabilize the United States financial system, right? तो उसके बारे में भी आई एम श्योर दैट बिटकॉइन पे परिमल व्हेनेवर ही टॉक्स ही ऑलवेज सेज कि हाउ कैन मतलब गवर्नमेंट अलाउ a thing like bitcoin, ठीक है, which acts like a parallel currency, ठीक है, तो no government will allow it. So that's what he directly hit on, कि it is evil. He calls it evil because it can destabilize, it has the ability to destabilize the United States financial system, right? So this was the sixth point. Seventh point is very small. तो interestingly बहुत सारे लोग, when we are talking about big companies, when we analyze companies, when we talk about governance, right, तो we always talk about कि what is the next, मतलब next in line कौन है, who is the new CEO, अगर once they go तो who will be the next person, right? तो उसके लिए भी मतलब Berkshire Hathaway is a very very big company, right? तो speculation always happens कि what after Warren Buffett and Charlie Munger, तो उसके लिए भी मतलब these guys are, they never sit alone on the stage. Second year it has happened, ठीक है, they were accompanied by Ajit Jain and Greg Abel, right? Or mostly everyone is expecting that once Buffett retires or he is no more, right, is so Greg Abel basically will take up the uh, reins, right? and and then they have a Ajit Jain also as a backup option, right? So clear governance standard, right? So it shows the
kind of high governance standard that company has, and that's why it is so valued, right? So that's why so many people talk about it. That's why that company does consistently so well. So ये सब चीजें हमें और समझनी चाहिए. So ये few things which I really learned well. So that was my learnings which I shared with you from the Berkshire Hathaway's annual summit, right? If you guys have anything which you could gain out of it, or आपने कुछ interesting और पढ़ा है, तो do write in the comment section, and I will, or put it here, I will try to take that up as well.